चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? सबने एक बार तो चैप्टर पढ़ा है, राइट? So what this chapter is about, do you know that? What this chapter is about? This chapter is about a hat. This chapter is about a good luck hat. Okay. So what happens in this chapter? There is a hat and which is considered to bring good luck. हमें जैसे लगता है ना कि कोई चीज आपके लिए good luck लेके आती है, कोई आप लच्छा पहनते हैं, कोई आप पेंडेंट पहनते हैं, and you feel this is lucky for you, right? So similarly, in this chapter, there is a hat which is lucky for a person who is the hero of the story, and let's see what happens to him when he follows the good luck which this hat brings to him. Okay, so we will quickly revise the chapter because this chapter is quite long, and so we will quickly revise the chapter and then we will discuss the questions and answers. Okay, just a second. Where is the chapter? Okay, so this chapter is about a person whose name is what? George Pavlides. Okay, George Pavlides is the name of that person. And this story, it is in the Greece. Okay, ये जो Greek जो country है, वहाँ की ये story है. And वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक ऐसी bridge है. Okay, that bridge. This is a high bridge. And ये bridge कहाँ पर है? कॉरिंथ कैनल के ऊपर. कैनल मतलब क्या होता है? नहर जहाँ पे पानी बहता है. That is called as Corinth. Okay, Corinth. That is called as canal. So this bridge, okay, this bridge is on the Corinth canal. Okay, ये जो bridge है ये कहाँ पे है? ये कैनल के ऊपर है. कैनल means नहर, नहर जिसमें पानी बहता है ना, that one. So ये जो bridge है ये कहाँ पर है? ये Corinth कैनल के ऊपर है. और यहाँ पे क्या कल्चर है इस कंट्री में? That people who are standing, ये जो भी ब्रिज से निकलता है, ब्रिज पे खड़ा होता है, और इस कैनल के अंदर जो भी बोट्स शिप्स जा रही होती है, तो पीपल उनको वेव करते हैं, हाई करते हैं, उनको उनपे शाउट करते हैं. तो सामने वाला जो पर्सन है, दैट आल्सो शाउट्स. ओके, तो दिस इज अ रेगुलर रूटीन देयर, दैट इज अ कल्चर ओवर देयर कि आप उनको हाई कर दो, वो आपको हाई करते हैं. आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, बट फिर भी वो ब्रिज पे खड़े तो वो हाई करते हैं, और जो बोट्स के अंदर है, जो शिप्स के अंदर है, वो भी हाई करते हैं. जो पैसेंजर्स जो कैनल के नीचे से निकल रहे हैं, जो बोट्स के अंदर, शिप्स के अंदर, उनको भी हाई करते हैं. ऐसा. सो व्हाट हैपेंस one day George Pavlides was walking home from work. So here is the hero. Who is the hero here? George Pavlides. Okay, so one day he was going to home from his work. अपने ऑफिस से वो घर जा रहा था. So he stopped on the bridge. Okay, so George Pavlides, he stopped on the bridge. ये bridge के ऊपर रुका. This is George Pavlides. This is our hero. Okay, so he stops on the bridge, and as is the culture here, that you wave to the people who are passing from the bridge. ठीक है, तो आप लोगों को wave करते हो, right? So similarly, just a second, people are still joining the class. Okay, so I will let others also join the class because today there is an issue with Scholars ERP. So today you can join the class on time or not time. That is okay. Today it's fine. Today it's forgivable. Okay, so what happens in the chapter? This person, George Pavlis, he is waving to the person who is on the ship. ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते. George Pavlis और ये passenger who is on the ship. They both don't know each other, but still they are like waving at each other. They are waving. Why they are waving? Because that's a culture in this country. Okay, so ये अपना wave कर रहा है, and the passenger is also waving at him. Waving means what? Wave करना, hi करना, hello करना. So George waved his hat, but it flew off his hand. So George ने क्या किया? George Pavlis is the hero of the story, who lives in this country. ये यहाँ पे खड़ा होके wave कर रहा है आने वाली boats को. Okay, so George waved his hat. George ने अपनी hat उतारी और लोगों को wave करने लगा. Okay, तो उनको wave करने लगा, तो उसकी hat क्या हुई? एकदम से उससे छूट गई, उसके हाथ से गिर गई, and it flew off his hand. उससे हाथ से उड़ के चली गई, और वो कहाँ चली गई? इस पैसेंजर के पास में नीचे गिर गई. Okay, so George was waving with his hat off, and this hat जो है, ये hat flew off, and where did this hat go? ये hat कहाँ पे गई? पैसेंजर के पास में. जो पैसेंजर एक बोट पे खड़ा था, उसके पास में चली गई this hat. What did the passenger do then? जो पैसेंजर था, उसने क्या किया? उसने he picked it up. He picked that hat up,
and put it on his head. Okay, so जो पैसेंजर था उसने इस हैट को अपने सर पे रख लिया. ठीक है, उसकी हैट थी, वो गिर के उसके पास चली गई. अभी उसको देने जा तो नहीं सकता था, because he is on the boat and he is on the bridge and they both don't know each other. Okay, so इसकी हैट इसके पास गिर गई, तो इसने उठा के अपने सर पे रख ली. Okay, and उसने वापस उसको वेव किया कि तुम्हारी हैट मेरे पास है. He's just waved. They don't know each other, so the passenger waved happily to George. उसने उसको happily wave किया that I have your hat. I am having your hat. Okay, so अब जॉर्ज ने क्या नोटिस किया? जॉर्ज कौन? हमारा जो हीरो है. What did he notice? He noticed that the ship had an Italian flag. कि उसने क्या नोटिस किया कि जो शिप है वो उस पे एक इटालियन फ्लैग है. इटालियन फ्लैग मतलब होना किसी शिप के ऊपर इंडियन फ्लैग है. दैट मीन्स दैट शिप बिलोंग्स टू इंडिया, राइट? सो इफ सिमिलरली इफ ship has an Italian flag, that means the ship belongs to Italy, right? So इससे जॉर्ज को क्या पता चला कि ये शिप जो है ये इटली की शिप है. ओके, एंड द नेक्स्ट डे उसने क्या डिसाइड किया? उसको लगा कि जॉर्ज नोटिस दैट द शिप हैड एन इटालियन फ्लैग, एंड उसको लगा कि इटली में वो शायद शिप कहाँ जा रही है? वेनिस पे जा रही है. वेनिस इज द सिटी. वेनिस एक सिटी है, शहर है इटली के अंदर. एंड उसको लगा कि मेरी हैट जो अभी तो यहाँ थी मेरे पास, अभी इतनी दूर कहाँ चली जाएगी? इटली के अंदर चली जाएगी, वेनिस के अंदर चली जाएगी. कितनी लॉन्ग जर्नी करेगी मेरी जो हैट है वो. बट उस रात को क्या हुआ? वन इम्पोर्टेंट थिंग हैपेंड. उस रात को जॉर्ज को बिल्कुल नींद नहीं आई. ओके, उस रात को जॉर्ज को नींद क्यों नहीं आई? उसको लगा कि मेरी हैट एक जगह से दूसरी जगह इतनी लंबी जर्नी कर रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्यों हो रहा है? So he wanted to follow the journey of the hat. उसने क्या डिसाइड किया कि मेरी हैट जहां जाएगी मैं उसको फॉलो करूंगा. because he could not sleep. He was so restless. वो बेचैन हो रहा था कि मेरी हैट ऐसे उड़ के क्यों चली गई, मेरी हैट कहाँ चली गई. So he decided that wherever his hat will go, he will follow the hat. कि वो हैट के पास जाएगा, ये उसने डिसाइड कर दिया. So next day उसने क्या देखा? उसने नेक्स्ट डे उसने क्या किया? ही लेफ्ट हिज जॉब. उसने अपना जॉब छोड़ दिया इस कंट्री के अंदर, एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू वेनिस. और वो कहाँ पे चला गया? इटली में चला गया, वेनिस के अंदर. ओके, सो व्हाट डज जॉर्ज डू देन? जॉर्ज ने अपने जॉब छोड़ दी और वो इटली के अंदर चला गया, वेनिस के अंदर चला गया अपनी हैट को ढूंढने के लिए कि मेरी हैट जहां जाएगी मैं उस जर्नी को फॉलो करूंगा. सो वन डे, अब जॉर्ज उसने वेनिस में चला गया. वो वन डे व्हाट हैपेंस? And George जो है, he was walking past an office with a big window. So one day what happens? George कहाँ से निकल रहा था? एक ऑफिस के पास से निकल रहा था. उसकी बहुत बड़ी विंडो थी, बहुत जो कांच की विंडो होती है. It was a window like that. So in this window, what did he see? He saw a picture of a large white ship. उसने वहां पे क्या देखा? एक लार्ज व्हाइट शिप की पिक्चर देखी, एक बहुत बड़ी शिप की पिक्चर देखी. और उसको वो श्योर था कि ये वही शिप है जो शिप पे वो पैसेंजर था जहां पे उसकी हैट गई थी. ओके, तो जॉर्ज ने एक फोटो देखी. रैंडमली आप कहीं से निकल रहा था जॉर्ज, उसने वहां पे एक फोटो देखी, शिप की फोटो. एंड ही वाज श्योर, वो उसको कंफर्म था कि ये वही शिप है जिस शिप पे उसकी हैट उड़ के गई थी. सो वो कहाँ गया? उस ऑफिस के अंदर गया, एंड वो उसने ऑफिस को उसकी हैट के बारे में बताया कि मेरी एक हैट थी, वो उड़ के आई थी. तो उस पर्सन ने क्या बोला? there came a passenger who sold us this picture. कि एक पैसेंजर आया था जिसने हमको ये पिक्चर बेची थी. ये पिक्चर मतलब ये जो शिप की पिक्चर है वो बेची थी. और वो पैसेंजर कहाँ गया? अमेरिका गया. ओके, सो वो पैसेंजर कहाँ गया? अमेरिका गया. Okay, children. So before moving to the next page, let's start with the oral response questions. I hope I'm giving you the summary in a very, very brief manner, but I'm covering the whole chapter. So let's discuss the oral response questions first. Okay, so who will answer me the questions? Oral response question first. Where is the high bridge situated? So where is this high bridge situated? I want the answers from you very, very quickly because otherwise this chapter will be left, okay? So I want the answers from all the children and I want the answers very, very quickly. So ये जो high bridge है, ये कहाँ पे situated है? अंशुल माहेश्वरी, I am unmuting you. अब मैं किसी को भी randomly unmute कर दूंगी, आप आपका hand raise करेंगे चाहे नहीं करेंगे. I am randomly I will unmute you. Yeah, Anshul. The high bridge is situated across the Corinth Canal in Greece. Yeah, good. So this high bridge कहाँ पर है? ये कॉर्निथ कैनाल में है, ग्रीस के अंदर. ओके,
So question number 2, what did the people of Greece like? ग्रीस के लोगों को क्या पसंद था? Faster children, raise your hands. आपको एक तो आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जो जूम के अंदर आप रेज हैंड्स रेज करते हैं, डू यू ऑल नो हाउ टू रेज योर हैंड्स इन द जूम क्लास? डू यू ऑल नो? आपका उसमें एक ऐसा वाला ऑप्शन आता है, एक हैंड वाला ऑप्शन आता है. सो लाइक दैट, डू यू नो वेयर इज इट? लाइक फॉर एग्जांपल Kashish Raka is raising your hand. Kashish, can you explain to the whole class how do you raise your hand? और वो ऑप्शन कहाँ आता है जो रेज हैंड करने वाला? या कशिश? मैम मैम मोर में आता है. कहाँ पे? मोर में आता है. मोर में Yes, मोर ma'am. कहाँ पर आता है आपके पास? आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर मोर कहाँ Ma'am, पे आता है? पार्टिसिपेंट्स के जस्ट थोड़ा सा आगे. पार्टिसिपेंट्स सबको सुनाई दे रहा है? मोर कहाँ पे आ रहा है आपके पास? जो राइट के अंदर आपके अंदर मोर आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स की थोड़ा सा आगे मोर दिख रहा है आपको, और मोर के अंदर क्या ऑप्शन आता है कशिश? मैम डिस्कनेक्ट ऑडियो चैट एंड देन लोअर हैंड, रेज हैंड. रेज हैंड है ना? तो आपका वहां पे जो मोर ऑप्शन आता है उसके अंदर आता है कुछ. सो नाउ यू नो, राइट? एवरीवन नोज हाउ डू यू नीड टू रेज योर हैंड. Okay, thank you, Kanish. Thank you so much for explaining the class. Okay, so we will move towards the next question. What did the people of Greece like? Greece के लोगों को क्या पसंद था? Okay, Devraj, I'm unmuting you. Wait, everyone is. Yeah, Devraj, I've unmuted you. Ma'am, they all go to the bridge and they wave their hands to the passenger. या गुड. सो इनका क्या कल्चर है कि वो वेव, जो इनके हाथ है वो वेव करते हैं इस ब्रिज पे खड़े होके. और किसको वेव करते हैं? टू द पैसेंजर्स हु आर ऑन द शिप्स ऑन द बोर्ड. गुड देवराज. क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज वन डे? सो उस ब्रिज पे कौन रुका? एवरीवन, हु स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज? दिव्यांजलि, आई एम अनम्यूटिंग यू. आप सबने हैंड्स रेज ही कर रखे. हैंड्स रेज भी करने हैं और लोअर भी करने हैं. ओके, जब आपको नहीं पता है आंसर, यू कैन लोअर योर हैंड्स. ओके, सो आपका जो जूम वाला जो हैंड है, जूम वाला हैंड समझ गया आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? सो यू कैन लोअर योर हैंड्स इफ यू डोंट नो द आंसर. ओके दिव्यांजलि, गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Who stopped on the bridge one day? On the bridge. Yeah, good. So George Pavlet, who is the hero of our story, he stops on the bridge one day. Question number 4. What did the passenger wave happily to George? Why? It's not what did. Okay. It must be उस passenger ने happily क्यों wave किया और क्या wave किया George को? George जो passenger था, what did he wave happily to George? Yes, everyone. Anshul, Divyanjali, Devraj, you have already answered. Ronak, I'm unmuting you. Wait, I've unmuted you. The passenger picked it up and put its head on his head. So, what did he wave? उसने wave क्या किया? He waved the hat. What did the passenger wave? जो passenger था उस hand wave किया उसने, पर उसकी जो hat थी, किसकी hat थी? जो जॉर्ज पावलिट्स की hat थी वो उसने wave की. Okay? So passenger क्या wave किया passenger ने? Passenger waved the hat of George Pavlitz to George. उसने उसको hat wave की. Okay, so next oral response questions. Which country flag did the ship have? कौन से country का ship था? That is Italy. I'll answer. Okay, we cannot do all the questions if we. Okay, so question: which country का, कौन से country का flag था इस ship के ऊपर? It was Italy का flag था. Where was the ship going to? Ship कहाँ जा रही थी? Bharat, I'm unmuting you. Where is Bharat? If you raise your hands now, children, you are clearly visible to me. If you raise your hand in the Zoom class, then you will be clearly visible to me. कौन hands raise कर रहा है, कौन नहीं hand raise कर रहा है. Okay, who have? Yes, Bharat.
The ship was going to Italy. Yeah, the ship was going to Italy, probably to Venice. Venice, Italy के अंदर एक जो city है, वहां पे वो जा रही है. भारत, I'm not able to see you. Yeah, here you are. आप लोगों को पता है अभी अभी आप सबको पता है ना कि हैंड्स कैसे रेज करने हैं जूम के अंदर. आपका जो मोर वाला ऑप्शन आ रहा है, मोर वाला ऑप्शन टॉप राइट कॉर्नर में आपका मोर वाला ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है टू रेज योर हैंड और टू लोअर योर हैंड. एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन गॉट इट. सबको समझ में आ गया कि आपका हैंड कैसे रेज करना. पहल जैन, डू यू नो नाउ हाउ टू रेज योर हैंड? पहल, you know, right? Okay, good. Okay, so next, let's move towards the next question. What was there in the picture? So what was there in the picture? जो picture उसने जॉर्ज ने ऑफिस में देखी. What was there in the picture? Neha, you are not visible to me. Just switch on your camera. Ronak Kumar, I'm unmuting you. Okay. Yes, Ronak. मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए. There came a passenger who told us this picture. What was there in the picture? वो जो picture थी उसके अंदर क्या था ये बताओ. The seat which the ship, जो ship की The- फोटो थी उसके अंदर, we saw a picture of large white ship. Large white ship की picture थी उसमें. Okay. Okay. So next question. Whom did George tell in his office about the hat? George ने अपने office में, whom did the George tell in his office about the hat? Yeah, ये अभी तक हमने नहीं किया. Okay. Okay, so let's move towards the chapter and then we will start doing the questions. Okay, still children are coming to the class. Okay, children, I have admitted some more children, some more students to the class. I hope everyone is admitted. Today there's been an issue with your Scholars ERP, so no problem. We are still on the class. Okay, so next 3 questions. Why did the George Pavlidze? Question number 1. Why did George Pavlidze? What's written over here? I'm not able to see. Just wait for a second. Yeah, why did George Pavlidze stop on the bridge? George Pavlidze bridge pe kyun ruka? He stopped on the bridge because he wanted to wave to the passengers. Bridge pe ruka so that he can wave to the passengers who are on the ship, on the boats in the canal. Canal ke andar jo bhi boats, ships ja rahe the, unko wo wave kar sake. That's why George Pavlidze stopped on the bridge. Okay. Question number 2. How had the hat been taken to Venice? जो hat थी वो Venice कैसे गई? Okay, I want the answer for this question from you people. How had the hat been taken to Venice? Venice कैसे गई जो hat थी वो? Archit, I'm unmuting you. Ma'am, George Pavlidze waved his hand and suddenly strong wind flew away and the hat flew out of his hand and landed at the feet of the passenger. Yeah. So then this passenger was probably going to, the ship was probably going to Venice, and that's how the hat went to Venice. Okay. For what reason did George Pavlidze leave his job in Greece? So George Pavlidze ने अपना job क्यों छोड़ा? Because he was so restless. वो बहुत restless हो गया था कि मेरी hat क्यों गई ऐसा उड़ के, and he wanted to go wherever the hat goes. So that's why he left the job in Greece and he went and he wanted to continue the journey wherever the hat is going, and that's why he left the job. उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? बिकॉज उसको जहां भी उसकी एड जा रही थी वहां जाना था, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द जॉब. Okay, this
पैसेंजर वॉज ऑन हिज वे टू अमेरिका। अब जो पैसेंजर था, जो ऑफिस में जो पर्सन था, जहाँ पे जिस ऑफिस में पिक्चर लगी थी, उसने क्या बोला कि ये जो पैसेंजर था ये अमेरिका जा रहा था। ओके, सो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जॉर्ज पवलीट्स की हैट कहाँ जा रही थी, अमेरिका जा रही थी। मतलब अमेरिका जा चुकी थी, क्योंकि वो हैट किसके पास गई थी, उस पैसेंजर के पास गई थी जो पैसेंजर अमेरिका जा रहा था। एंड दैट्स व्हाई जॉर्ज पवलीट्स की हैट भी मतलब अमेरिका जा रही थी। सो जॉर्ज ने उसको डिसाइड किया, जॉर्ज ने क्या डिसाइड किया कि मेरी हैट अमेरिका जा चुकी है, मतलब वो पर्सन के साथ, माई हैट हैज गॉन टू अमेरिका। सो शायद मेरी हैट चाहती है that I come to America, that I go to America. So George ने क्या decide किया था, that he will go wherever his hat goes. Okay, so he will continue the journey wherever the hat is going. So he decides that my hat has gone to America, so I will also go to America. So अब जॉर्ज तो कहाँ से था, ग्रीस से था। सो ही डिड नॉट नो इंग्लिश। ओके, ही ग्रीस है तो वहां पे ग्रीक लैंग्वेज चलती है, दूसरी लैंग्वेजेस चलती है। सो ही डिड नॉट नो इंग्लिश। अब उसको अमेरिका जाना था। सो व्हाट डिड ही स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। एंड उसके बाद क्या किया उसने, ही गॉट अ जॉब ऑन द शिप दैट वाज गोइंग टू अमेरिका। एक शिप जो अमेरिका जा रही थी, उसने उस शिप पे जॉब ले लिया। उसने एक तो उसको पैसा कमाना था बहुत ज्यादा, ताकि वो अमेरिका जा सके। दूसरी बात, he wanted to learn English so that he can speak English in America. And that's why did he do? He got a job on the ship that was going to America. अब जब वो शिप पे था, जो शिप अमेरिका जा रही थी, तो उस पे उसने बहुत सारी जर्नीज की, अमेरिका से जाना, अमेरिका से वापस आना, और उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बिकॉज ही वाज डूइंग अ जॉब ऑन द शिप, एंड that's how he collected so much money, and that's how he earned so much money. अब फिर उसके पास जब सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो गया, देन ही वेंट टू अमेरिका, वो शिप से उतर गया, एंड दैट्स हाउ ही, अब वो अमेरिका में पहुंच गया। ओके, सो okay, oral response questions. Where were the passengers going? Where were the passenger going? This passenger, excuse me. Okay, some more people are joining the class today. Okay, it's okay. The passenger was going to America. Okay, so this passenger was going to America. Whom does George Pavlidis thank? George Pavlidis ने किसको thank you कहा? George Pavlidis ने thank you कहा किसको? George Pavlidis thanked the person जिसने उसको ये information दी. कौन? The person जो office में था उसको. So George Pavlidis thanked the person who was in office and who gave him this information that the person was going to America. Okay, उसने उसको thanks कहा. What did George begin to learn? Yeah, you people answer. What did George begin to learn? Children, when I'm not asking a question, you should have to lower your hands. Okay, otherwise आपका पूरी class के अंदर hand up ही आता है, ठीक है? So when I'm not asking a question to you or you don't want to answer, just lower your hands. वहीं पे more के अंदर lower hand का भी option है. Got it? Okay. So what did George begin to learn? Neha, I'm unmuting you. George began to Yeah. learn Yes, English. Yeah, good. So George began to learn English. Just a second, children. Yeah, my voice is audible, children, now. My voice is audible, right? Okay. So what did George begin to learn? He began to learn English. And when did he get a job on ship going to America? उसने ये job कब ली? So when did he get a job on the ship going to America? उस जो ship जो अमेरिका जा रही थी, उसने ये job कब ली? So when George knew, George को पता चला कि उसकी hat जो है वो अमेरिका जा रही है, तब उसने he decided to get a job on the ship. Okay, after 6 months, he got a job on the ship that was going to America. So 6 months के बाद में उसने job ले ली on the ship which was going to America.
Okay, so now what happens? Okay, where is it? Yeah. Uh, yeah, so now जॉर्ज अमेरिका चला गया, वहां पे उसने क्या किया, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ रेस्टोरेंट. अमेरिका में जॉर्ज कहाँ गया, न्यूयॉर्क में गया. न्यूयॉर्क इज द सिटी विच वाज इन अमेरिका एंड जॉर्ज वेंट देयर एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट देयर. ओके, वहां पे एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा. सो ही वाज सो ऑनेस्ट एंड काइंड एंड ऑलवेज स्माइलिंग. बहुत अच्छा था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत उदार था, एंड ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग. ही वाज ट्रीटिंग ऑल द कस्टमर्स विद अ स्माइल. और बहुत मेहनती था. ही वाज हार्ड वर्किंग, ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड ही वाज ऑनेस्ट एंड काइंड. सो आफ्टर सम टाइम उसने बहुत पैसा कमा लिया एंड आफ्टर सम टाइम उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया एंड उसने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ले लिया. Okay, children, so we will continue with this. Okay, children, so if you have any doubts, others, if you have any doubt, just tell me. Raise your hand and tell me if you have any doubt or if you want to do any other chapter. We will. Okay, so class 6 people are also started joining. Okay, Devraj has a doubt. Anyone has a doubt regarding this chapter or regarding any other chapter which you want to do? Yes, people. Your hands are still raised. Ronak, Anshul, do you have a doubt? Do you have a doubt, children? किसी को कोई डाउट है या कोई दूसरा चैप्टर करना है? ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, बट इसके अलावा किसी को कोई चैप्टर करना है, then you can tell me. Anshul is raising your hand. Anshul, do you have a doubt? A doubt or you don't have a doubt? Okay, Anshul, I'm unmuting you, okay? Just tell me. I mean, if you have a doubt. chapter 1, the school with a difference. Chapter 1, the school with a difference. Okay, so after this chapter, we will be doing chapter 1, the school with a difference. Okay, any other thing you want to know? Any other person who has a doubt regarding this chapter? Ronak is raising his hand. Yes, Ronak. Ma'am, in 5th chapter. 5th chapter is which one? 5th chapter is Niami, the friends forever. Friend forever. Nimai, the friend forever. Okay, children. So I don't think we have much time left in your half yearly. So हम क्या करेंगे? Ma'am, एक दिन के हम अंदर हम पूरा बोलिए. Ma'am, Yes, I Ronak, don't बोलिए. do the question answers of 5th chapter, ma'am. Where we find the answer? One thing I want to tell you all, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि मैम हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, हमने चैप्टर नहीं किए हैं. So first thing is you can find those question answers in your WhatsApp group because I have sent all the answers in your WhatsApp group. Ma'am, Second I thing, find, but if you don't, yes, tell me. मैम व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं है. व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको जो आंसर सेंड किए, मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनके सारे सबके आंसर्स आपके पास 200% होंगे. मैंने सबको रोज आपको आंसर की सेंड किया है तो उसके अंदर होंगे. अदरवाइज यू कैन आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज हेल्प ईच अदर आउट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है स्कूल, सो दे डोंट हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द प्रीवियस चैप्टर्स. ओके, सो यू कैन टेक कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर फेलो स्टूडेंट्स. अब आप फेलो स्टूडेंट्स आप कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कैसे करेंगे? यू टेल मी. फोन नंबर से मैम. डू यू ऑल हैव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप एक दूसरे का नंबर देख सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, in the WhatsApp group, in your class WhatsApp group, Ronak, you can see each other's numbers, right? So just try calling those students जिन्होंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हो और उनसे आप आंसर्स लीजिए. एवरीवन. ओके, चैप्टर्स हम अभी रिवाइज कर ही रहे हैं. हो सकता है हम सारे के सारे चैप्टर्स ना रिवाइज कर पाए, ये भी हो सकता है हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें ना रिवाइज कर पाए. बट द बेस्ट थिंग वुड बी यू टेक द हेल्प ऑफ योर फेलो स्टूडेंट्स. आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनसे हेल्प लीजिए. कोई आपको हेल्प के लिए पूछता है, सो जस्ट डोंट डिनाई टू दैट पर्सन कि हम मुझे हेल्प नहीं करना, मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं क्वेश्चंस. Since you have all the answers with you, since you already have done the question and answer, please help your fellow students out. Okay.
Okay, कोई student आपको call करता है, so just ask those students and just help them out. Okay. Okay, thank you, children. That's all for today's lecture. We will meet in the next one, and we will continue with this chapter, and also we will do the other chapters as well. Okay. Thank you so much. Bye bye.